developing news that's coming in. On one hand, you have allegations that the PFI has been instigating several Muslim students to insist on wearing a hijab and enter colleges. And now the PFI making a counter allegation against the ABVP, saying that the right-wing group has been supplying saffron shawls only to instigate students to stand up against the hijab in college and schools. Now, I'm going to cut across to what really instigated or who instigated this showdown. The Campus Front of India, the SDPI-backed student outfit named by the Karnataka Education Minister. It appears that the SDPI, as per the Karnataka Education Minister, has been instigating these protests in trying to push these girls to insist on wearing the hijab inside. And then on the other hand, you have the Shri Ram Sene, allegedly who started the saffron shawl counter stir. The Shri Ram Sene allegedly has in fact pushed young youth, boys, to wear saffron shawls, stand outside college and protest against those girls entering college with a hijab. And then the AIMIM, who staged a protest right outside the DC's office as well to try and furthermore fuel this already volatile region in Karnataka, Udupi particularly, where this issue started, of a hijab ban. Eventually, girls insisting they want to wear it, the college saying that you can't, you've got to follow what the government's order is, that is uniformity inside educational institutions. Now, the BJP versus Congress's political face-off is really intensified over this entire hijab controversy here. In fact, the BJP versus the Congress's political showdown over this, they've highlighted some glaring hypocrisies. Congress leader Priyanka Gandhi has slammed the BJP government, crying foul over disrespecting women's rights to wear whatever they want, be it a gungat or even jeans if they want to. This is, however, starkly different from what her party colleague and Chief Minister Ashok Gehlot had said about wearing a gungat. The BJP has now slammed the Congress over their doublespeak. In 2016, Gehlot spoke out against gungat, saying that women must be freed of the gungat in the 21st century. In fact, this hypocrisy is also being pointed out over outrage expressed by Malala, who tweeted in support of hijabs in school, even after she had fought the Taliban for imposing the very same burqa rule. Now, AIMIM chief Asaduddin Owaisi has also gone down heavily on the BJP government over the hijab row in Karnataka, but had in the past called for a gungat ban himself. एक महिला का घूंघट बंद कर दिया, तो जब तक घूंघट रहेगा तब तक महिला कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जमाना गया घूंघट का, जमाना गया। मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो अपना। आप जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। All right, I'm going to quickly cut across to Supriya joining us for a little perspective on this, and also Nolan Pinto, who's been tracking all the developments coming in from the Karnataka High Court. Shrija joining us. Shrija, if you can hear me, I tried to reach out to you a little while ago asking you what the PFI has said. We understand that the PFI at the Udupi Press Club, just where I am, a little further away, has addressed a press conference accusing the ABVP of trying to instigate this kind of commotion here among Hindu students, supplying them with saffron shawls. What more has the PFI said? And the media statement was because right now we have CFI president right now with us. He have come out just all the allegations stating it wrong. They've been, it was said, the president, he said that he was not called for they themselves did not contacted the students. The students and their parents who are supporting hijab contacted them before giving a plea to High Court. So this is just that they give support, moral support to the students there.
Now now only just a few hours before we get court's decision, now PFI have come front and they have claimed their own ideas and strictly talking against BJP and the other supporters, and the president of Campus Front of India is supposed to talk to us right now. And Shrija, is he with you? Is the PFI representative joining you right there? Can you question him? Ask him exactly what he's alleging. I want to hear from himself. Yeah. 1 second. All right, I'm going to come back to you, Shrida. It seems like a delay there. I'm going to get across to Nolan. Nolan Pinto, here, Karnataka High Court, after much of the deliberations yesterday in court, they moved the matter to today. 2:30 p.m. is when the hearing will begin. Give us a lowdown as to what really happened yesterday. We understand that the judge started off, when the hearing just kicked off, the judge opened the conversation by saying, why don't you first allow the students to complete this year's syllabus, let them finish this year's course, and then you decide on restrictions from the next year. Well, Nabila, in fact, yesterday, this is exactly what happened. The petitioner's advocate requested Justice Dixit if the state could actually allow students to complete say, just about 2 months. Their exams are in April. But the state did not agree to that. And that's the reason why they decided to focus on the deliberations. Now they're focusing on few important issues. One is hijab integral to Islam. Basically, is it important that someone wear a hijab as part of Islam? Second part is the hijab a facet of the fundamental right to freedom of speech and expression? And 3, has the government, by issuing this government order, the GO, overstepped its authority? So these are the points that they've actually been deliberating, debating and arguing on the entire part of yesterday. And they also focused on the issue of public order, because the government, when it came out with the GO, according to the Karnataka Education Act 1983, this was on Saturday, stated that uniform is compulsory, a uniform attire. Everyone is equal when they enter a class. This is in order to maintain equality, integrity, and also public order. So they have been arguing or debating on the issue of the term public order. How does one wearing a hijab create public nuisance? So, since nothing much happened yesterday, 2:30 in the next, 20 minutes odd, the court should reconvene. The case should be heard once more. Justice Dixit requested the people, the student community and the people public at large, to maintain peace and tranquility. Because we saw what really happened yesterday, the protests across the place, in various districts over here, stone pelting in some districts, lathi charge in some districts. Whether or not Islam allows hijab, how important is hijab, and what an important practice it is, or whether it is an important practice in the religion or not, all that is a debate that should be and must be kept outside institutions, educational institutions. What we worry is of these students' future, their educational future, all hanging in balance, and that's what's highly unfortunate. But Nolan, stay with us. We know that political backlash has now intensified. The BJP, of course, now blaming this entire hijab controversy on the Congress. In fact, the BJP accuses the Congress of being behind this entire row, the hijab row, saying that the man who's been defending or taking up the petition in favor of the hijab is basically a Congress leader. Devdutt Kamath, advocate Devdutt Kamath, the BJP reveals that Kamath, arguing behalf of pro-hijab petitioners in Karnataka High Court, is basically linked to the Congress. The BJP has also now tweeted a letter of the Congress appointing Devdutt Kamath as the chairperson of the Congress's Legal Coordination Committee. In fact, meanwhile, countering the BJP here, Devdutt Kamath has said that he lives in a free country. He can appear and argue for any case as he wishes, even if he belongs to any party. He also added that nobody can question
the choice of belief. Now, the Saffron Party has claimed that Congress is working towards breaking the society. Another Karnataka minister, meanwhile, has said that Congress comes to power, it is likely going to make a law asking Hindu women to wear a hijab as well. So I don't think you can hold it against a person for appearing on a professional matter. So as far as the arguments made in the case, I've seen that all those arguments are completely constitutional. Court has not come down on him saying that you've made unconstitutional arguments. Court has not said that you've said something to the effect of breaking the country down. So it makes little difference. It's like saying that Mr. Sibal appeared for one party or another. Mr. Sibal has clarified that he had done that on a professional basis. I think Devnath Kamath has also said he has done it on a professional basis. As far as Mr. Kamath Congress connection is concerned, I have no idea about it. Because I don't know if he is not a part of the KPCC, he's not a part of the AICC. I don't know on what basis these people are saying that he's a Congress leader. He is welcome to represent whoever he feels like. I am a lawyer too. I am welcome to represent whoever I feel like. However, our political affiliations do reflect in the briefs that we take. And in this case, by repeatedly quoting, the Quran and the Hadith, where, he even claims mention that menstruating girls should not be exposing their face and hands. So all of these, age-old practices which were shunned by women over the years, even in the Middle East, are all now being quoted by Mr. Devnath Kamath so as to ensure that, their vote bank politics continues. मुझे बच्चों के बारे में चिंता है. मुझे लगता है कि ऐसे डिवाइड एंड रूल काइंड ऑफ थिंग नहीं हो. कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करती हूँ ऐसा वीडियो देखने के बाद किसी तरीके की ग्लानि महसूस होगा ऐसी सरकार को जिन्होंने सिर्फ धर्म पे अपनी राजनीति की है और वोट बटोरा है, लोगों का बंटवारा कर करके वोट बटोरा है. और दुर्भाग्य की बात एक और है कि एक पुरुष सैफरन शॉल पहनकर, एक महिला, जो हमारा हिंदू धर्म हमें कहता है कि महिला का सम्मान होना चाहिए, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं. तो आप ना हिंदुत्व के प्रतीक है ना हिंदुइज्म के प्रतीक है. जब भी हम कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, हम ये ड्रेस कोड पालन करेंगे. अभी तो ड्रेस कोड पालन करना है. हम जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड जो है, उसको मैं पालन नहीं करूंगा, ये बोलना ठीक नहीं है. The government in Karnataka is in siege. Everybody knows they are losing this election. And the only way for the BJP to do something better is to communalize the whole issue. When you communalize and politicize an issue, it does not get sorted out because they don't want it to get sorted out. यूनिफॉर्म का मतलब ही मतलब एक जैसी फॉर्म. तो यूनिफॉर्म में ये हिजाब और कोई अन्य प्रकार की उन्मादी चीजें लाना और उनको लगाना ये उचित नहीं है, ये गलत है. Some sorts of moral policing have been conducted on the sisters of our Muslim population, which certainly create a great fissure in our society. That is why we lodge the protest that government should come out and give a statement of what is their opinion on the atrocities being committed upon the Muslim girls in Karnataka and other places in the name of hijab. अगर आप प्रोटेस्ट करवाओगे, इंजीनियर करोगे, तो सब जगह प्रोटेस्ट हो जाएगा. इसको तूल देने की ज़रूरत थी भी नहीं, ना ही तूल देने की कोशिश की गई है. इसको कुछ लोगों ने इंजीनियर किया है ताकि उनको फ़ायदा मिले. मुद्दा ये है कि हिजाब का मुद्दा उठा क्यों है. आज उस समुदाय के अंदर, महिलाओं के अंदर सरकार की नीतियों के लिए आकर्षण, उसको कैसे तोड़ा जाए. आप उल्टी सीधी चीजें करिए. If some girls wear jeans, they have a problem. If girls wear skirts, they have a problem. If the girls wear headgears, they have a problem. And this has been happening in that part of Karnataka for the past few years. And the fringe element, those are involved, are identified with a certain political party, and the whole of the entire country knows this. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಸುವಂತ ಕಾನೂನನ್ನು ತಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದೇನೋ ಇವರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನಸಿಕತೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ड्रेस कोड, डिसिप्लिन, डिग्निटी, ये किसी भी इंस्टीट्यूशन का प्रोवोकेटिव है. अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जिस तरह से इन मुद्दों पर भी सियासत कर रहे हैं,
वो कतई जो है वो न तो उस समाज का भला कर रहे हैं जिसके नाम पे ये सियासत कर रहे हैं, न अपना भला कर रहे हैं। We see other MPs wearing their attire in the BJP, like the Sadhvi Pragya and people like that. So I think that in case if people do have religious sentiments, it should be respected because that is their freedom of expression. The BJP is really not got any development work which they are doing, because of which they have to retort to such kind of things. Now, we know that the issue has been gathering a lot of reactions all over. Asaduddin Owaisi, who seems to be the predominant Muslim voice, has reacted on this hijab controversy. He spoke to India Today's Anjana Kashyap. Let's take a listen at his views. एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई? और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हैं उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है। हर एक महिला को आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मजाहरा। अब एक 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हैं वैसी साहब कहते हैं, अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ बात को। मैंने अपनी तकरीर में, अब यही प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको खामी नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए आप? ये क्या है? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आप क्यों इतना थ्राइव करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, हिजाब का मुद्दा है तो ना ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है सर, पोलराइजेशन रोकने के लिए बाकी पार्टियां आज कोई बोल भी नहीं रहा मुस्लिम्स के लिए। अरे मत बोलिए ना, मत बोलिए, खामियाजा भुगतेंगे 10 तारीख को। ये सब कहाँ गई मोहब्बत मोदी जी की, बीजेपी की? मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूँ। कहाँ के भाई हैं आप? किधर के भाई हैं आप? दीजिए ना, ठहरिए ना सामने लोगों के। आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरी महिलाएं। अरे भैया, फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है? हिपोक्रेसी है ये। Well, that's Owaisi in Uttar Pradesh. Undoubtedly, the hijab ban in Karnataka has resonated in the poll-bound state of Uttar Pradesh. I was there just a day ago speaking with several of those women there, many of the followers who wear the hijab, to ask them what they feel of a hijab ban and how they feel wearing a hijab. Is it something that they feel suppressed to do so or forced to do so, or do they do it on their own will? Here's what they said. Let's have a listen. हिजाब के बारे में आपका क्या राय है? कर्नाटका में बहुत हंगामा हो रहा है कि मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहन के क्लास के अंदर बैठना मना है। ये गवर्नमेंट कॉलेज का रूल है, प्राइवेट कॉलेज में जो भी करे, गवर्नमेंट कॉलेज में अलाउ नहीं है। तो हिजाब कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? हम लोग के लिए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये शरीयत में है हम लोग की, और हम लोग इसको अपनी मर्जी से पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग के ऊपर दबाव है या हम लोग किसी की वजह से पहनते हैं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग अपनी खुशी से पहनते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक अकेली लड़की
खुद अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल गई, तो ये उसको ताकत मिलती है, हिजाब से ताकत मिलती है। हम लोग की ये एक ताकत है। बोलते हैं कि दबाव पे पहनते हैं, नहीं दबाव पे नहीं, हम कंफर्टेबल फील करते हैं इसमें। हम इसमें सोचते हैं कि हमारी इससे हमारी हिफाजत रहेगी। हम अगर हिजाब पहनकर निकलते हैं तो हम उसमें खुद को सेफ्टी महसूस करते हैं, इसलिए हम हिजाब पहनते, किसी के दबाव में नहीं पहनते। ये भी बिल्कुल सही है। हम सेफली अपने आप को, जब हम निकलेंगे किसी मार्केट में सेफली नहीं महसूस करेंगे तो हम किस तरह निकल पाएंगे मार्केट में। तो ये हम जानते हैं कि हमारे लिए बहुत सेफ है, इसकी वजह से हम जो है वो अपने लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये हमारी मर्जी है। क्या आप हिजाब किसी के सामने निकालते हो? नहीं। आप हिजाब हर बार पहन के रखते हैं? हाँ, हर बार पहन के रखते हैं, कोई किसका दबाव नहीं है, कोई नहीं। हमें अच्छा लगता है तो पर्दा, और हम तो चाहते हैं इससे भी ज्यादा पर्दा करें। इससे क्या पूरा तो बंद है, इसके ऊपर बंद क्या करोगे? आग सिर्फ आग की तो खुला है। जो ना पहनना चाहते उनकी मर्जी, जो पहनना चाहते उनकी मर्जी। बिल्कुल, ये तो अपने अंदर एक ये समझिए कि ईमानी ताकत होती है। जिसको अच्छा लगता है वो पहनता है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो पहनता है। लेकिन अगर दबाव है, आप जैसे बोलते हैं कि दबाव है, तो सबके ऊपर होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग के लिए जो अच्छा है हम लोग को समझ आता है, जो आप लोग के लिए है जो नहीं पहनते वो उनके लिए अच्छा है। We heard the views of those women in Uttar Pradesh. We hear that there are protests happening in Kolkata as well. Suryagni Roy joining me live for a little perspective on that. Suryagni, women in Kolkata wearing the hijab out on the streets, protesting against the ban that has been imposed by the Karnataka government. What is their take? Well, Nabila, we are showing you live visuals of Kolkata where, you know, women, like female students are hitting the streets. They are university students, Alia University students, and they are protesting against what happened in Karnataka. We'll speak to some of them. ये मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, बेसिकली कौन से टॉपिक्स है, क्या चाहते क्या है आप लोग? हम लोग चाहते हैं हिजाब हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमसे छीने ना कोई। ये हम पढ़ेंगे, पढ़ के जाएंगे यूनिवर्सिटी, कोई ना रोके हमें। ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप क्या पहनना चाहती हो? हाँ, ये हमारे ऊपर। लेकिन एक और सवाल उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि एक यूनिफॉर्म भी होना चाहिए जो सबको मानना चाहिए? स्कूल कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म भी तो होना चाहिए। स्कूल में तो है एक यूनिफॉर्म। तो ये सिर्फ कॉलेज के लिए आप लोग कह रही हो? स्कूल सबके लिए हम कह रहे हैं, जहाँ भी जाए हमको कोई ना रोके, कोई ना बोले कि ये इस्लाम है, ये पहन के जा रहे हैं हिजाब, हम पहनेंगे, हमारा अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। This is what these students are saying, that it should be on them, this is their right, whether to wear it or not. Now, you know, we are seeing majority of the protesters over here, these are students, all of them are students of Alia University, and you know, majority of them are females, and they are wearing the hijab and they are out, and what they have written over here is that hijab is our fundamental right. So this is what, you know, ever since we were here, ever since this protest started, we spoke to so many of them, and they claim that this right should be on them, whether they wear a hijab or not. Back to you, Nabila. Right. Suryagni, I'd really like you to go back to them and I just ask them a question. That there is a lot of talk about how there is no uniformity in schools. If hijab is being allowed inside classes, then you know, people from other religions will want to wear their religion on their sleeve. They'll want to wear their symbol representing their religion inside classrooms, and this is not uniform. And there is uniformity that every school insists on. Nabila, I'll ask it to the student itself. अच्छा, ये एक सवाल फिर से सामने आता है कि अगर मुस्लिम लड़कियां जो है वो हिजाब पहन रही है, उनको अलाउ किया जाए, तो अगर दूसरे धर्म के लोग भी अपने कपड़े पहन के, अपने रिलीजियस कपड़े पहन के स्कूल या कॉलेजेस जाएं, तो वो अब यूनिफॉर्मिटी का क्या होगा फिर? संविधान ने अधिकार दिया है कि जो अपना वो खुद का मतलब खुद का ये जो है खुद पहन सकते हैं, अपना व्यक्तिगत। बेसिकली जिसको जो पहनना चाहिए, मतलब पहनना चाहते हैं वो पहनने अलाउ करना चाहिए। यस, अलाउ करना चाहिए, जो भी धर्म का हो। हाँ, किसी भी धर्म का। हाँ। So basically, Nabila, what they're saying is irrespective of religions, irrespective of caste, creed, community, anyone who wants to wear something should be allowed. We had also asked them that whether, you know, if what happens with uniforms, then shouldn't school students, you know, they have uniforms as well. So what these students are stating that it is not related to school, but
for college only. So this is what these students of Alia University claim, that irrespective of religion, what a woman wants to wear should be left to that particular woman, be it from any community, be it from any religion. Back to you, Nabila. Well, we heard them. Thank you very much, Suryagni, for joining us with those details. Now you have reactions coming in globally on the same.